Hello everyone, I am Prince Misra and I am starting a new series where I will discuss some of the important topics of the geography optional, and the topics I have selected in such a manner that these topics will also be beneficial for GS paper 1 geography component. So the topics I will cover purely from the geography optional for the geography optional student mainly, but these sessions will also be highly useful for the GS 1 geography component. The first session that I am going to take, in this session I will pick up a topic related to the industry. So I will discuss some of the theoretical context related to the industrial location and also some of the important industries that are prevalent in our country. And within that backdrop, we also try to understand that how the industrial growth has taken place, what are some of the important component that plays a role in the evolution of the industry, the location of the industry. The topic that I will cover is part of Geography Optional Paper 1. In Geography Optional Paper 1, we have a chapter 7, which is Economic Geography. In the chapter of Economic Geography, we have a topic of distribution of the industries worldwide. And related to that, in chapter 10, the chapter 10, that is the models and theories in the human geography. So models, theories, laws in the human geography, there we have a topic that is also part of the economic geography, but it is specifically written in the chapter number 10, that is Weber's industrial location theory. Weber's industrial location theory. It will give you the theoretical context of the location of the industry, because before starting, one thing that you need to understand that this industry topic is also part of your GS economy. So a lot of time students gets confused with the industry topic of GS paper 1, GS paper 3 economy and the industry topic of the geography. In fact, the topic itself that is mentioned in the syllabus makes it very clear that what is the main objective of studying the geography in the studying the industry in the geography optional and how it is distinct from the topic of economy. But let me help you out. Whenever you are studying any economic geography related topic, be it your agriculture, be it your industry, तो जो सबसे ज्यादा important component है when we are studying from the geographical perspective is the distribution. We are mainly concerned about the distribution, its location. We are not concerned about the sale. We are not concerned about the consumption. We are not concerned about the market dynamics, capital. So that is not the context, that is not the objective of the geography optional. And within that backdrop, this topic is being mentioned in your syllabus, and in fact this is how the Weber have propagated his theory, the famous industrial location theory. In fact, till today, if we will look out other than the economic component, then always it will be a very important question that why some of the areas in the world wise developed industrially, so industrial development is comparatively good, but in some of the other areas the industrial development is not that much good. In fact, this is also very much relevant for our own country. In our country, you will not find that the industrial development is a uniform. Some of the areas are industrially developed, some of the areas are not that much industrially developed. We have some of the major industrial region in our country. Then how these areas have emerged as an industrial region? What important factors have played in that particular role? So this theory, this concept answers all the questions related to the location of the industry. In fact,
दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ पेपर 2. सो जब आप पेपर 2 देखेंगे, द पेपर दैट इज बीइंग रेफर्ड एज अ ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, तो ज्योग्राफी ऑप्शनल का जो पेपर 2 है हमारा, वहां पे भी आपको चैप्टर नंबर, यू विल फाइंड द चैप्टर नंबर 4. सो चैप्टर नंबर 4 इज अ टॉपिक ऑफ इंडस्ट्री. There we have a different topic, but there we have a distribution of some of the major industries. So distribution of sugar industries, distribution of cotton industry, textile industry, pharmaceutical industry, cement industry, iron and steel industry. तो ये जितनी भी हमारी मेजर इंडस्ट्रीज हैं हमारी कंट्रीज में, उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है किस बेसिस पे, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ लोकेशंस ऑफ द मेजर इंडस्ट्रीज. सो द फैक्टर्स ऑफ लोकेशन, देयर आर वेरियस फैक्टर्स, देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स. But out of that factors, the most of the industries location will be highly based on the idea of the Weber. So Weber, in fact, Weber has given this model very early, but still the Weber is very much relevant whenever anyone interested in understanding, learning the distribution of the industry within the country as well as worldwide. So these are the topics that we are going to cover through this concept, through this theory. In fact, this particular discussion will also be very helpful because in your GS paper 1, so mainly we will discuss this from the context of geography optional, but in GS paper 1 we have a geography, and in geography we have a topic of distribution of natural resources. Also we have a topic of factors responsible for the location of प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी इंडस्ट्रीज. सो ये जो आपका जीएस पेपर 1 में टॉपिक है उसमें भी हेल्पफुल रहेगा. In fact, nowadays the kind of questions that you are framing in the GS paper 1, if someone is having the geography as an optional, so definitely those students will get benefited. लेकिन ऐसे student जिनका geography optional नहीं है, those who are just relying on some general understanding of the geography based on the NCERT reading gets stuck in those questions related to the concept of the geography optional. क्योंकि बहुत सारे student they limit their study around the physical geography, और ह्यूमन ज्योग्राफी में उनकी अंडरस्टैंडिंग उतनी अच्छी होती नहीं बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द कंटेंट, इनफैक्ट क्वालिटी कंटेंट, और इन जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है. तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी अगर आपकी नहीं होगी तो जिस तरीके से जीएस पेपर 1 में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसको थोड़ा टैकल करने में प्रॉब्लम होगी. ऑब्वियसली इट डजंट मीन दैट द स्टूडेंट हु इज नॉट हैविंग द ज्योग्राफी ऑप्शनल तो अब वो पूरा का पूरा ज्योग्राफी ऑप्शनल पढ़े, ऐसा बिल्कुल नहीं है. बट ऑफ कोर्स इन सम ऑफ द टॉपिक्स जहां पे आपका आरओआई बहुत अच्छा होने वाला है, मींस इफ यू विल कवर वन थ्योरी एंड बेस्ड ऑन वन थ्योरी you will be having there will be a surety that 10 marker or 15 marker questions definitely will be asked in the examination and I will be in a position to answer in a better manner. So it is going to be suggestive to go for that particular discussion. So the topic that I am going to cover will be equally important for the GS geography also. So let's begin our discussion of industrial location theory. Industrial location theory has been propagated by the very famous German economist, German economic geographer, that is Alfred Weber. Now, brief background I will give before directly delving into this discussion of the theory. Alfred Weber is writing in the early part of the 20th century. So, Alfred Weber is writing in the early part of the 20th century, and Alfred Weber is not happens to be the first proponent of this locational based theory. तो पहले जोग्राफर नहीं है कि जो लोकेशनल थ्योरी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, लिख रहे हैं. In fact, the first locational theorist happens to be the another German named as the von Thunen.
Von Thunen have written a locational theory, that is the agricultural locational theory, in 1826. Von Thunen was mainly concerned about the land rent, how to utilize the land effectively so that to maximize the land rent, और land rent आपका maximize हो उसके लिए कौन से किस तरीके से आप लैंड को यूटिलाइज करें, किस तरीके से लैंड को यूटिलाइज करें फ्रॉम द कंटेक्स्ट ऑफ एग्रीकल्चर मींस व्हिच crop needs to be cultivated at which place. So von Thunen has given the model in 1826. And if you will look out the Europe, then you will find in the early part of the 19th century, majority part of the Europe was mainly doing the agriculture. So when von Thunen has written, that was very much valid. But in later part of the 19th century, you will find that majority of the Europe, specifically the Western and Southern Europe, the area has been transformed from the agriculture to the industry, manufacturing industry. So when the Alfred Weber was writing in the early part of the 20th century, he is writing from his own experience that how in their district, how in their vicinity, how in their area, the agriculture is being replaced by the industry. Now, when the agriculture is being replaced by the industry, agriculture was uniform, but industry is not uniform. It is like that in your district, in your particular area, region, imagine करिए कि everyone is cultivating the crops. लेकिन जैसे ही इंडस्ट्री की बात आई कि कुछ टाउन्स डेवलप हो रहे हैं, कुछ टाउन्स का ग्रोथ ज्यादा हो रहा, तो वहां पे देयर इज अ डिस्पैरिटी मींस some of the areas are getting benefited highly, whereas some of the areas are lacking. So Alfred Weber, by going through his own experience of what is happening in the Germany in their district, he tried to look out the answer of this question, that what led to the settling up of the manufacturing industry, or why the manufacturing industry have grown in that particular area, in that particular location. So he also, when he gone through with all these industries, then he realized that most of these industries that have been set up in that particular district are the profit making industry. So the question has changed over the period of time. So when in 1909, when he has presented his model, so the question has changed that where to set up industry to make profit. And when he was referring the industry, he was mainly concerned about the manufacturing industry. So where to set up the industry to make the profit, and he was mainly looking out from the perspective of cost reduction. So in a way you can say his whole idea of the industry is associated with the production. He was not looking from the perspective of distribution. He was not looking from the perspective of transportation, distribution, consumption. So he was not considering the distribution, he was not considering the consumption as well as the capital. So when he was referring to the industry, his idea of the industry, his idea of the profitable industry is simply associated with the location of the industry. Means if you will set up the location, if you will find out the location right, so you are going to earn the profit. If your location is not right, so you are not going to earn the profit. Obviously, in the present time period, when you will start looking out his contemporary relevance, so in some of the cases you will find that this location becomes completely irrelevant. तो आज के समय बहुत सारी ऐसे सेक्टर हैं जहां पे ऐसा लगेगा कि हो सकता है लोकेशन का कोई मतलब ही नहीं है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम कैपिटल इज गोइंग टू बी द मोर क्रूशियल पार्ट. तो ये जो आपका फंडिंग का मॉडल है, जो आपका सीड फंडिंग है, the angel investors hai, so there are different dynamics in the present time period industry, but again you need to remember that he was mainly referring to the mostly the manufacturing industry. और आज हम लोग जो बात कर रहे हैं तो यहाँ पे variety of the industries की बात कर रहे हैं. we are looking out the different types of industry that are prevalent. So he was mainly concerned about the location of the manufacturing industry, how to
decide the location, what are the some of the factors that should be looked upon while deciding the location of any particular industry. तो location के basis पे उन्होंने he has presented his theory. In fact, Alfred Weber happens to be a very famous economic geographer and he comes from a very famous family. His brother Max Weber happens to be a very famous sociologist. तो sociologist थे Max Weber, उनके ब्रदर हैं, that is Alfred Weber. Now Alfred Weber, while giving his idea of industrial location, his idea of optimal location, he has considered lot of assumptions. तो अपनी थ्योरी को इन्होंने प्रेजेंट करने के लिए कुछ assumptions दिए, और इन फैक्ट assumptions को अगर आप देखेंगे तो you will find that the assumptions assumed by Alfred Weber is more or less very much influenced by the idea of von Thunen. So von Thunen का जो आइडिया था उससे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है Alfred Weber. Alfred Weber has assumed certain things and based on that he has presented the model. So Alfred Weber, what are the some of the major assumptions? First of all, he has considered the same like plane surface. So presence of plane surface, you can say this plane surface is very much associated with the isotropic surface. Isotropic surface idea is being associated with the von Thunen. Then he considered the rational economic man, तो ये ह्यूमन्स पर्सपेक्टिव थे. ये जितनी भी हमारी लोकेशनल थ्योरीज है उसमें सभी में इट इज कंसीडर्ड दैट द ह्यूमन्स डिसीजंस आर सिंपली बेस्ड ऑन द फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ प्रॉफिट, व्हिच इज नॉट every time correct in the present time period. In fact, in that particular time period, he also have assumed more or less availability of different cities. So how he varied his idea from the von Thunen, because von Thunen have considered that there is only one center. So von Thunen's model consider only one center. He considers that there is a availability of the different towns. So different towns are prevalent. Now the most important assumption that you should know, he considered that raw materials are present, and raw materials are present in two different categories. One of the categories of the raw material is known as ubiquitous raw material. So one of the categorization of the raw material is the ubiquitous raw material. What is this ubiquitous raw material? Ubiquitous raw materials are those raw materials that are present everywhere. Means there is no problem in their availability. So raw materials are present everywhere, and if the raw materials are present everywhere, then there is no problem in finding those raw materials. And some of the important raw materials in this category are like, we have a air, we have a water, we have a sunlight. In fact, if we look out from the critical perspective in the present scenario, so in the present scenario we will find that might be it is not that much relevant, because जब आप प्रेजेंट टाइम पीरियड में देखेंगे तो प्रेजेंट टाइम पीरियड में वाटर जैसे तो जरूरी नहीं कि वाटर हर जगह पे प्रेवलेंट है, तो वाटर की अवेलेबिलिटी इज नॉट इक्वली प्रेजेंट, बट ऑफ कोर्स von Thunen is considering like that, so we will just need to look out. So ubiquitous raw materials and then the localized raw material. Localized raw material. Now von Thunen is suggesting that raw materials are of two categories, localized and the ubiquitous raw material. Industry की जो location होगी, the location of the industry will be based on the localized raw material, not the ubiquitous raw material. So location of the industry will be based on the localized raw material. In fact, why he is considering that the location of the industry? Again, he is trying, his model is a normative model. He is just trying to suggest that where need to be set up the industry, but his idea is based on the experience while going through the different industrial development. So his one of the main idea that the Alfred Weber got, he got this idea from the Ruhr region.
In the Ruhr is a very important region of the Germany where we have a good availability of the coal. तो रूहर रीजन में आपका जो एरिया है वहां पे कोल की अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी है, और कोल की अवेलेबिलिटी की वजह से वहां पे बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री डेवलप हुए, खास करके स्टील प्लांट, लाइक द वेरी फेमस क्रुप स्टील प्लांट. सो द क्रुप स्टील प्लांट इज प्राइमरली associated with this. So based on his experience, based on his ideas, what he has seen, he is just trying to construct a model. तो मॉडल जो बता रहे हैं उसका कुछ वैलिडिटी है ग्राउंड पे. इट इज नॉट लाइक दैट ही इज सिंपली सजेस्टिंग समथिंग आउट ऑफ नोवेयर. सो लोकलाइज्ड रॉ मटेरियल. नाउ he considers that raw materials needs to be taken to the industry. तो अगर आपके पास रॉ मटेरियल है तो रॉ मटेरियल को आप इंडस्ट्री ले जाएंगे, और इंडस्ट्री में यू विल डू द मैन्युफैक्चरिंग, एंड आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग यू विल टेक द मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट टू द मार्केट. सो देयर आर टू वे वेयर देयर इज अ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दैट इज इन्वॉल्व. नाउ हिज मॉडल इज सिंपली सजेस्टिंग दैट द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज सेम. So there is no problem in the transportation cost. Transportation cost going to be same. The variation will be the distance. Later on he has also considered the role of weight. लेकिन जो पहला उनका assumptions था उसमें he considered that there is a uniform transportation cost, uniform rate of transportation. तो जो ट्रांसपोर्टेशन का रेट है दैट इज गोइंग टू बी यूनिफॉर्म, सेम. अगर आप इसे प्रेजेंट कंटेक्स्ट में देखेंगे देन यू विल फाइंड इन द प्रेजेंट कंटेक्स्ट ट्रांसपोर्टेशन रेट इज नॉट गोइंग टू बी सेम. अगर आपको गोल्ड ट्रांसपोर्ट करना हो, अगर आपको पोटैटो ट्रांसपोर्ट करना हो, अगर आपको आयरन ट्रांसपोर्ट करना हो, सो इट्स क्वाइट ऑब्वियस दैट वी आर नॉट गोइंग टू हैव द सेम रेट. बट वेबर इज कंसीडरिंग दैट द रेट ऑफ जो आपका ट्रांसपोर्टेशन रेट है वो सेम रहने वाला है. अब जो आपका कॉस्ट वेरी करेगा बिकॉज रेट इज गोइंग टू बी सेम, सो द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट विल बी अ फैक्टर ऑफ डिस्टेंस. सो इफ यू नीड टू ट्रांसपोर्ट मोर, so obviously you are going to incur more charges and your overall cost of production will increases. In a way, if you need to earn more profit, क्योंकि उनका जो मॉडल है दैट इज प्राइमरली फ्रॉम द प्रोडक्शन साइड, नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ द कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो पूरा का पूरा मॉडल प्रोडक्शन साइड है. सो ही वाज जस्ट लुकिंग टू डिक्रीज, ही वाज जस्ट लुकिंग टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को हम लोग मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, उसका केवल एक तरीका वेबर को समझ आया एंड वेबर ने उसको थ्योराइज किया, एंड दैट वाज दैट रिड्यूसिंग द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. इन फैक्ट लेटर ऑन वी विल फाइंड दैट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज नॉट ओनली related to the distance but also related to the weight. So it is the distance and weight that will decide the transportation cost, and he was just looking out that how to minimize this transportation cost. In fact, because of this, his model is also known as least cost ट्रांसपोर्टेशन मॉडल और सिंपली लीस्ट कॉस्ट मॉडल. तो इसी वजह से इनके मॉडल को लीस्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मॉडल भी कहा जाता है, सिंपली लीस्ट कॉस्ट मॉडल भी वी रेफर इट. सो इनिशियली लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, जो आपकी लोकेशन है, लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, लोकेशन ऑफ industry will purely depends on ट्रांसपोर्ट कॉस्ट. तो जो लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री होगी वो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट पे डिपेंड करेगी. बट इन हिज ओन राइटिंग later on the Weber has also considered some other roles. So Weber has considered some other roles,
And in fact, you can say initially his model is a transport cost model, but later on he has also included the labor cost. Please keep in mind. तो इसे आप इनफैक्ट यहां पे ही आप लिख सकते हैं फिक्स्ड लेबर कॉस्ट. तो इनिशियल जो उनका एजम्पशन था दैट इज देयर इज अ फिक्स्ड लेबर कॉस्ट और देयर विल बी अवेलेबिलिटी ऑफ चीप एंड एफिशिएंट labor. So cheap and efficient labor is available everywhere, which is might not be valid in the present time period, present context. So in the present context, it is not going to be valid. But this is how the Weber is thinking. So Weber's idea, Weber's model is, assumption is that there is a uniform rate of labor cost. क्योंकि Weber का जो मॉडल है, वेबर ने आइडेंटिफाई किया लोग इंडस्ट्रीज को, जो भी उनके पास डेटा था उस डेटा के बेस पे उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि किस तरीके से उनके डिस्ट्रिक्ट में आपकी एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री सेटअप हुई. अब ये जो इंडस्ट्री जहां जहां पे सेटअप हुई है उस पे ही इज जस्ट ट्राइंग टू फाइंड आउट द आंसर दैट व्हाई द इंडस्ट्री हैज बीन सेटअप, वेयर इट हैज बीन सेटअप, और उसी के बेसिस पे उन्होंने मॉडल प्रेजेंट किया. तो उस मॉडल में क्योंकि उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत माइट भी अंडरस्टैंडिंग होगी, लेकिन उनका जो सेटअप डेटा था वो बहुत लिमिटेड था, और उस लिमिटेड सेटअप डेटा में यू विल फाइंड दैट देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ द सेम काइंड ऑफ लेबर. ये उसी तरीके से है कि जैसे अर्ली पार्ट ऑफ द 20th सेंचुरी, तो अर्ली पार्ट ऑफ द 20th सेंचुरी इफ समवन इज विजिटिंग द मुंबई, तो अगर कोई मुंबई विजिट करता था या कोई अहमदाबाद विजिट करता था, और मुंबई, अहमदाबाद या कोलकाता विजिट करके अगर आप इंडिया के बारे में लिखना चाहें या आप इंडिया के बारे में लिख रहे हैं, तो दैट इज नॉट गोइंग टू बी करेक्ट. इनफैक्ट गांधी जी हैज आल्सो रिटन इन हिज ओन ऑटोबायोग्राफी दैट बाय visiting the Mumbai or by looking out Mumbai, you will not be able to understand that what is India. तो उसी तरीके से वेबर भी थोड़ा इन्फ्लुएंस थे कि जिस एरिया में लिख रहे थे उसी एरिया के बारे में उसी के बेस पे उन्होंने मॉडल बनाया. आज के समय में आप थ्रू आउट द वर्ल्ड वाइड यू विल फाइंड दैट द रेट ऑफ लेबर इज नॉट यूनिफॉर्म. इन फैक्ट इसके बाद हम लोग देखेंगे वेबर हिमसेल्फ हैज ट्राई टू अपडेट. तो वेबर ने अपडेट किया, लेकिन इनिशियल ही हैज नॉट कंसीडर. बाद में वेबर ने कंसीडर किया कि देयर कैन बी ए चीप लेबर, एंड इन फैक्ट उसी के बेसिस पे उन्होंने नेक्स्ट मॉडल दिया दैट इज द लेबर कॉस्ट. तो कुछ जगहों पे इंडस्ट्री आपकी शिफ्ट होने लगेगी जहां पे चीप लेबर कॉस्ट मिलेगा. जैसे इन व्हाट साइड यू विल फाइंड दैट दिस एंटायर डेवलपमेंट ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया, क्योंकि साउथ ईस्ट एशिया का हमारी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री डेवलप हुई इंडिया की, बाद में आपकी इंडोनेशिया भी है, फिलीपींस भी है, वियतनाम भी है. इसमें जो सबसे बड़ा रोल है, द मेजर रोल दैट हैज प्लेड इज द quality labor but at the cheaper cost. In fact, the evolution of or development of the global manufacturing hub in China is purely associated with the labor cost. It is the labor cost that has resulted in growth of China. और भी फैक्टर काम किए हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट या वेबेरियन मॉडल कहें हम लोग कि वेबर का मॉडल किस तरीके से काम किया, दैट इज क्लियरली विजिबल इन केस ऑफ चाइना. लेटर ऑन ही हैज आल्सो कंसीडर्ड रोल ऑफ इफेक्ट ऑफ एग्लोमेरेशन. So these are the three components. Based on that, he has presented his theory. So these three elements we will look out one by one. So one by one we will look out. So जो पहला initial model है, that is based on the labor cost. So how the labor cost has affected the the first component is the transport cost. So how the transport cost has affected the location of the industry. Based on the transport cost, he suggested that the location of the industry will be simply associated with what quantity of raw material we needed for manufacturing the product. तो मैन्युफैक्चरिंग में हमें
किस क्वांटिटी में या क्या क्वांटिटी हमें रॉ मटेरियल की यूज करनी है. He has presented a index which is known as the material index. Now this material index is a proportion of weight of raw material needed for production of product. So material index is simply the ratio of proportion of weight of raw material and the weight of product. Let's take an example. For 1 kg manufacturing of sugar requires 5 liter of sugar juice, or let's say 3 liters of sugar juice. But this 3 liter of sugar juice, you will get it from 10 kg of sugar cane. उसी तरीके की है कि लेट सपोज प्रोडक्शन ऑफ द स्टील, तो 1 quantity of steel production will be needed almost 8 quantity of coal and 1 quantity of iron ore. So almost 9 quantity of coal and iron ore is needed. And if you will include other raw materials, so it is more than the 9. Let's say 10. So 10 quantity of raw material needed for the production of 1 quantity of steel. तो जब भी आपका जो रॉ मटेरियल्स का यूज है वो ज्यादा है और अगर आपका प्रोडक्ट कम है, फाइनल प्रोडक्ट, सो दैट इन दैट केस व्हाट विल कम आउट, इट इज MI will be more than 1. But there will be scenarios, there will be cases in which the raw materials weight is lesser and the final product's weight is higher. In that case MI will be less than 1. अब ये किस केस में होगा? This will be valid in the case of when water is being added. So when the water is being added, because water he considered as a ubiquitous raw materials, not as a localized raw material, तो अगर आपका water add किया जा रहा है तो उस केस में, उस सिनेरियो में what will happen, that the weight of product will become more. Like your distillery industry. So in distillery industry, beer industry, what happens? There is the addition of water, and through the addition of the water the final products becomes more. So when the weight of final product is more, so in that case the MI is lesser. But what will happen in case of sugar industry, metallurgical industry, iron and steel industry? So for the production of iron and steel industry, small production requires more raw material. Sugar, small amount of sugar production requires more amount of sugar cane. So these will fall in this category. And when MI is more than 1, this is being referred, these industries is being referred, this activity is being referred as a weight losing. So these industries will be in the category of weight losing industry, and these raw materials will be referred as the weight losing raw material. So sugar industry, weight losing industry. Iron and steel industry, it's a weight losing industry. So whenever you will come across any industry in which for the production of the final goods you will require more quantity of raw material, so that will be in the category of weight losing industry. Similarly, if you will require lesser amount of raw material, so that is weight gaining. So weight losing and weight gaining. There will be another category of the industry, and that category is like whatever the amount of raw material you are utilizing, you are ultimately producing the same amount of final product. So when your final product amount is same
as the amount of raw material that you are using, that industry is simply referred as the footloose industry. Like you will have the lots of materials like a refinery, petroleum refinery. So petroleum refinery is the crude oil, that the amount of crude oil we use is the same amount of finished good we get. Crude oil is there. Other than the crude oil, we also have the cotton textile. Cotton textile is a very good example. Cotton textile is a footloose. So when MI is going to be 1, it will be footloose industry. Here we have example of cotton textile. Other than the cotton textile, we also have refineries, petroleum refineries. Then also in the present time period, like software. So software industries, these can IT services, software. Basically, these are not industry; these are the services. But still, we try to consider them in the category of mostly the footloose industry. So there are 3 categorization based on the material index. This is material index. So the industry has been grouped, industry has been categorized in 3 categories. One in which we require lesser amount of raw material to produce more amount of final product, that is the weight gaining. Then the second category is we require more amount of raw materials to produce lesser amount of final goods, that is the weight losing. And third is the quantity, the amount of raw materials weight and the weight of final good is going to be more or less same. तो अगर दोनों का weight same है तो that will be the footloose industry. Now he presented the location of the industry. अब आपकी location क्या होगी? Location decide करने के लिए again the Weber has suggested that there are 2 groups of locational industry. One group is where you will require one raw material to produce final goods. So when you will require one raw material, that industries have been grouped in linear model. So when there is a linear model of the industry, sorry. When there is a linear model of the industry, linear model means one raw materials and one market. Raw material center and the market. So when we require only one raw material, तो ऐसे केसेस में इंडस्ट्री कहां पे सेटअप होनी चाहिए? If material index is more than 1, मटेरियल इंडेक्स अगर आपका 1 से ज्यादा है तो दैट विल बी द वेट लूजिंग रॉ मटेरियल. इन दैट केस इंडस्ट्री शुड बी लोकेटेड नियर बाय द रॉ मटेरियल. मींस फॉर द वेट लूजिंग रॉ मटेरियल इज गोइंग टू हैव अ ग्रेटर पुल फॉर द लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री. तो वेट लूजिंग जो भी आपकी इंडस्ट्री होगी, वेट लूजिंग इंडस्ट्री, the pull will be toward the raw material. Whereas if it is the weight gaining, in case of weight gaining, the pull will be from the market. Market will act like a greater pull. So most of the weight gaining industry need to be set up nearby the market. Most of the weight losing industry need to be set up by the raw material. In fact, other than these two, if you will have the footloose, अगर आप footloose industry सेटअप कर रहे हैं तो footloose industry कहां पे सेटअप करेंगे? Footloose industry तो कहीं पे भी आप सेटअप कर सकते हैं, because here the quantity of raw material that you will use is going to give you the same amount of the final product.
But obviously, Weber was also very much satisfied. He was very much clear that transportation of final goods is going to be more crucial than the transportation of the raw material. That is why he suggested that ideally the footloose industry needs to be set up in between. तो दोनों के बीच में आपकी सेटअप होनी चाहिए इंडस्ट्री. बट इवन इन दिस केस देयर विल बी इनहेरेंट इफेक्ट ऑफ द मार्केट, जो कि बाद में उन्होंने एग्लोमेरेशन इफेक्ट का मॉडल दिया, द थर्ड कंपोनेंट ऑफ हिज थ्योरी, दैट इज एग्लोमेरेशन. सो बिकॉज ऑफ दिस एग्लोमेरेशन इफेक्ट इवन द footloose industry will also be having a greater pull by the market, which is clearly visible. In the present time period, when you will look out most of the footloose industry, you will find that majority of the footloose industry in our country is primarily being set up in those areas where already some level of industrialization. जैसे अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें, सॉफ्टवेयर में पूरा का पूरा मॉडल आपका चेंज हो गया है इन द प्रेजेंट टाइम पीरियड. और आज के मॉडल में देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द आईटी कंपनीज आर प्रोवाइडिंग द रिमोट लोकेशन. So you can sit anywhere and the so-called work from home concept is there. But even in that concept also you will find that majority of the multinational companies, the major companies of our country and the worldwide, their headquarters are located in only those areas or those cities that are comparatively developed. तो जो बड़ी सिटीज हैं वहीं पे आपको सेंटर देखने को मिलेगा. ऐसा नहीं है कि आप बिहार में कोई एरिया है जहां पे लैंड की प्राइस बहुत चीप है, या हमारा नॉर्थ ईस्ट का एरिया है कि जहां पे लैंड की प्राइस बहुत चीप है, कोई रूरल एरिया है कि जहां पे लैंड की प्राइस बहुत चीप है, और माइट बी द गवर्नमेंट इज गोइंग टू प्रोवाइड द सम टैक्सेस कि in UP, in some of the rural areas of some remote districts of eastern part of the UP, where the government is just saying that set up the Google center here and we will give you the free of cost land, free of cost electricity there, everything will be waived off for the taxation, but still you will find that the industry is not going to be set up. So in a way, even if the transportation cost is not that much relevant, then also there is an inherent effect of the market. तो footloose, तो अभी भी अगर हम contemporary के साथ भी like I am assessing, so even in this time period also his idea is valid. So जो आपकी footloose होगी that will be located to the nearby the market. Now the problem will start when you will have more than one raw material. तो अगर एक से ज्यादा रॉ मटेरियल्स हैं तो उन केसेस में what will be the location of the industry? So when there is only one raw material, there won't be any problem. So when there is only one raw material, industry will be located based on the greater pull. So optimum location of the industry, जो आपकी optimum location होगी इंडस्ट्री की, optimum location of the industry will have a effect of either raw materials or the market. If it's a weight gaining, the greater pull will be offered by the market. If it is a weight losing, so the greater pull will be offered by the raw material. So it is simply based on whether the raw material is a weight gaining or the weight losing. Now, when there will be more than one raw material that the industry requires, so in this case, the location of the industry will be based on that which raw materials have the greater pull, which raw materials is requires in a higher quantity. Because if you will have two raw materials, so when you will have the two raw materials, if both of these raw materials are pure, then there won't be any problem in the deciding that where the industry should be located. Or if we are using the weight gaining raw material, so again the industry will be located nearby the market.
The problem will occur when both the raw materials are impure and both the raw materials are the weight losing raw material. तो जब आपका weight losing raw material होगा तो it will depend upon that which raw materials needed in a higher quantity. Whichever the raw materials will be needed in a higher quantity, industry will be located nearby to that raw material. Let's say we are settling up of the industry in which there is a requirement of coal and iron ore. If the coal and iron ore is needed, it will depend upon that which quantity, which raw materials is needed in a higher quantity. If the coal is needed in a higher quantity, industry will have a greater pull toward the coal producing region. If the iron ore requires in a higher quantity, the industry will have a greater pull offered by this iron ore producing areas. So iron ore producing area will offer more pull if it requires in higher quantity. Coal producing region will have offer greater pull when it requires in higher quantity. So simple सा उन्होंने एक ट्राइंगल दिया जिसको कहते हैं लोकेशनल ट्राइंगल, और लोकेशन ट्राइंगल में he tried to denote that how the location of the industry can be decided. तो location of the industry किस तरीके से decide की जाएगी, that will simply depend upon which raw materials needed in higher quantity, that can offer the greater pull. तो ये तो आपका था मॉडल. This is how he suggested the model. This is how he has presented his model based on the transportation cost. So mainly अगर आप वेबर को देखेंगे तो वेबर का जो मॉडल है, वेबर का मॉडल primarily depends on the transportation cost. So just he has given his model in the form of transportation cost elaborately. In fact, Weber has presented his model in very early time period, and Weber, after that, there has been so many years past, almost we can say it's more than 116 years. So even after the 116 years, when you will look out the location of the industries worldwide, then you will find that still the Weber is very much valid. So still the Weber is very much valid, very much relevant, because most of the time, if the questions is being asked related to the location of the industry, so always you just need to first think about the Weber's idea. क्योंकि आपको क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाएगा. One of the type of question is simply associated with the location. तो किस तरीके से क्वेश्चन है, आगे बढ़ने before moving further, let's look out that how the questions will be asked. How the questions are going to be asked. So when you will look out how the questions are going to be asked, आप देखेंगे the questions of Weber you will find in part of the models and theories. So models and theories में आपको almost every year you will get a question either in paper 1, paper 2, in fact in some of the years in GS paper 1 also related to this industry. Like there was a question in 2021, present a critical account of Alfred Weber's theory of industrial location. So direct question 15 मार्कर इस तरीके से पूछ लिया जाता है.
So it can be asked as a direct question, but it also asks the questions related to the industries in India. तो इंडिया की भी जो इंडस्ट्रीज है, फैक्टर्स ऑफ लोकेशन, उस पर भी क्वेश्चन पूछा जाएगा पेपर 2 में ऑफ ऑप्शनल। तो वहां पे भी आपको वेबर को ही प्रेजेंट करना है, वेबर को ही याद रखना है। So this is how he has presented his model, that is the model based on transportation cost. After considering the transportation cost and considering that each and everything is going to be fixed, later on Weber also appreciated the role of labor. So labor he has considered that yes there is a possibility of labor cost. तो बाद में इन्होंने लेबर कॉस्ट को भी अप्रिसिएट किया। हाउ ही हैज अप्रिसिएटेड द लेबर कॉस्ट, ट्राई टू अंडरस्टैंड। नाउ लेट्स से देयर इज अ प्लेस कॉल्ड एज PO दैट इज गोइंग टू बी द ऑप्टिमम लोकेशन ऑफ एनी इंडस्ट्री। अब ये जो प्लेस है आपका, यहां पे लेट्स से I'm just considering that unit production of anything. Unit production of anything is needed 1,000 rupees in the form of labor cost and 800 rupees in transportation cost. तो कोई भी एक प्लेस है, let's say there is a place called as X. ये कोई प्लेस है जहां पे आपकी इंडस्ट्री लोकेटेड है और इस इंडस्ट्री यहां पे लेबर कॉस्ट जो है आपकी 1,000 रुपीज है और 800 इज अ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। टोटल मनी नीडेड इज 1,800 रुपीज। नाउ लेट सपोज दैट यू गेट टू नो दैट इफ यू विल मूव 100 किलोमीटर्स अवे, तो दिल्ली है, दिल्ली से आप 200 किलोमीटर और आगे जा रहे हैं, 250 किलोमीटर, लेट्स से चंडीगढ़ इज देयर। तो अब आपको पता चला कि इफ यू आर मूविंग 100 किलोमीटर्स अवे, द लेबर कॉस्ट इज गोइंग टू बी 900 रुपीज, ठीक है। एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, क्योंकि यहां पे 800 है, तो आपको वहां तक जाने में ज्यादा you need to spend more money. So let's say transportation cost is going to be this much. अब आपका जो टोटल प्रोडक्शन होगा 2100 है, यहां पे आपका 1800 है। So obviously it is suggestive, it is always rational to set out the industry here. But let's say there is another place in Bihar. Just for assumption, we will look out the other factors also. Here we are just looking out in a very crude form. तो बहुत crude form में हम लोग समझ रहे हैं। अब आप बिहार में सेटअप किए, वहां पे जो कॉस्ट ऑफ लेबर है दैट इज 500 एंड द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज लेट्स से 1200. So when you will include this, then you will find that it is 1700, means it is lesser than this optimum location P. Means the savings on the labor cost can offset the extra charge incurred in the transportation cost. And if the savings on the labor cost, क्योंकि यहां पे कितनी सेविंग हो रही है 1000 से 500, so there is a saving of 500 रुपीज। लेकिन यहां पे हम लोग ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा खर्च कर रहे हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में कितना हमारा एक्स्ट्रा चार्ज हो रहा, दैट इज 400। अब ये 400 का एक्स्ट्रा स्पेंड है और ये आपका 500 का एक्स्ट्रा सेविंग है। सो एक्स्ट्रा सेविंग इज मोर देन द एक्स्ट्रा चार्ज इनकर्ड, मींस it is advisable to set up the industry to those places where the labor cost is lesser. Obviously he is considering the cheap and efficient labor. So यहां पे एग्जांपल के तौर पे मैंने यूज किया है, don't try to look out in the crude form.
तो ऐसा नहीं है कि केवल चीपनेस, इट इज चीप एंड एफिशिएंट. So when you will get the cheap and efficient labor to some of the places that are away from the main place. Let's suppose initially industries were developing in the Mumbai. इंडिया में जो आपकी इंडस्ट्री डेवलप हो रही थी वो मुंबई में डेवलप हो रही थी, वो आपकी कोलकाता में डेवलप हो रही थी. बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम when they found that even in Bangalore also there is a extra cost of transportation, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो आपकी एक्स्ट्रा हो रही है, लेकिन वहां पे जो अवेलेबिलिटी है लेबर की वो चीप है. बट दोज आर नॉट द ओनली चीप लेबर, दे आर वेरी एफिशिएंट. व्हाई दे एफिशिएंट? तो ये जब आपकी आईटी इंडस्ट्री इंडिया में सेटअप की गई तो वहां पे जो आपका बेंगलुरु बिकम एज अ मेजर इंपॉर्टेंट हब ऑफ द आईटी सेंटर. हाउ इट बिकेम द इंपॉर्टेंट सेंटर? बिकॉज जो आपका पेनिनसुलर इंडिया है, सदर्न इंडिया है, वहां पे जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, जो डेवलपमेंट है, दैट वाज कंपैरेटिवली बेटर देन द नॉर्दर्न इंडिया. नाउ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज आल्सो एसोसिएटेड विद द एजुकेशन. तो एजुकेशन आपका अच्छा था, कॉलेजेस ज्यादा थे, यूनिवर्सिटीज ज्यादा थे. तो व्हेन यू विल हैव द मोर कॉलेजेस, मोर यूनिवर्सिटी, देयर विल बी बेटर ह्यूमन रिसोर्स. So in southern India there was comparatively better human resource primarily associated with the engineering. तो ये जो आपका टेक्निकल ह्यूमन रिसोर्स है उसकी अवेलेबिलिटी थोड़ी ज्यादा थी कंपैरेटिवली, एंड बिकॉज इट वाज हैविंग कंपैरेटिवली हायर अवेलेबिलिटी, सो दैट वाज द वन इंपॉर्टेंट रीजन, लेबर कॉस्ट. In fact, if you look out from the bigger perspective, so most of the Western countries, the companies that were operating when this IT sector has started coming out, means internet came out and it was now going to be easy to sit somewhere away from the main place where the office is there and you can work for that office, जिसको आप कहते हैं remotely. तो definitely they have started looking out the cheap labor, because if the labor cost is 1,000 rupees at some place and the same job can be done by someone who is sitting 1,000 miles away at the half of the price, so obviously it's a very much suggestive to employ that particular employee. So labor cost plays very important role, but the condition is in manufacturing the extra cost incurred in the transportation cost must be lesser than what we are saving in the labor cost. In fact, to present his model, he has come out with the concept of isodepane. अब यहां पे समझिए आइसोडेपेन क्या है. नाउ लेट्स से दिस इज द ऑप्टिमल लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री. अब ये जो आपकी ऑप्टिमल लोकेशन है इंडस्ट्री की, he has come out with some of the cost surface. Cost surface क्या है? We will understand. Now he has come out with the concept of cost surface, and in this cost surface there will be a uniform same rate of same cost, be it related to the transportation cost or be it related to the labor cost. So he has come out with the concept of isodepane. Isodepane is a cost surface. Now this cost surface is having uniform or same transportation cost, labor cost. So ये जो आपका cost surface है, let's say I am identifying the three cost surface. Cost surface 1, cost surface 2, cost surface 3. In this 3 cost surface, there will be points where everywhere you will have, wherever we are picking up the points, those points will offer same transportation cost and the same labor cost. So when the rate of that transportation cost, the rate of labor cost is going to be same, so that will be your cost surface. Now let's say here we are assuming that here your labor cost was 1,000 rupees and the transportation cost was 800 rupees. Now here at the one, labor cost is 500 rupees and transportation cost is 1,200 rupees. So this will be the point where savings on labor cost is
offsetting the extra money that we need to incur in transportation cost. So this will be referred as, ये जो आपका होगा, it will be referred as critical isodepane. Critical isodepane means the cost surface, the cost contours where the savings on the transportation cost, the savings on the labor cost is more than what we are going to incur on the transportation cost. So industry can be located at these places. तो बड़ा सिंपल सा मॉडल है. लेबर कॉस्ट में उन्होंने कंसीडर किया कि कुछ ऐसे प्लेसेस हो सकते हैं जहां पे लेबर कॉस्ट में सेविंग्स आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में जो एक्स्ट्रा चार्ज आपको लग रहा है उससे ऑफसेट की जा सकती है. तो अगर आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में जो ज्यादा पैसा आप लगा रहे हैं उससे ज्यादा हम लोग सेविंग लेबर कॉस्ट की कम प्राइसेस में कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली इंडस्ट्री कैन बी सेट अप टू दैट पर्टिकुलर प्लेस. तो लेटर ऑन ही हैज कंसीडर्ड द रोल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, लेबर कॉस्ट. तो पहला मॉडल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, बाद में उन्होंने कंसीडर किया कि नहीं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द डिसाइडिंग द ऑप्टिमल लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री, बट देयर विल बी सम ऑफ द केसेस जहां पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में जो भी हमें ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है उससे ज्यादा पैसा हम लोग सेव कर सकते हैं बाई गोइंग टू दोज प्लेसेस विच ऑफर चीप एंड एफिशिएंट लेबर. तो इसी वजह से जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है बाद में लेटर ऑन मोस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हैव स्टार्टेड शोइंग सम ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, सम ऑफ द शिफ्ट इन द लोकेशन टू प्लेसेस वेयर वी हैव प्रेजेंस ऑफ cheap and efficient labor. China is a classic example. Maquiladoras are the classic example of this Weberian model. तो कैसे आपका यूएस मेक्सिको के बॉर्डर पे जो ग्रोथ हुआ इंडस्ट्रीज का, या आपका चाइना में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का ग्रोथ हुआ, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है दैट इज बीइंग एसोसिएटेड विद दिस लेबर कॉस्ट. तो ये आपका ट्रांसपोर्ट कॉस्ट और आपका ये लेबर कॉस्ट हैपेंस टू बी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. Now comes to the role of agglomeration. The role of agglomeration, in this role of agglomeration, what Weber is suggesting, the role of agglomeration is more or less like a critical isodepane से ही आपका associated है. Let's say this is a optimum location of industry. So there are different industries that are there, and these industries will also have the isodepane. तो सभी का isodepane होगा. Now there will be some of the area where the effect of all these will be available, and where the effect of all these towns, all these optimum location is going to be present, will offer the effect of agglomeration. तो जो ये effect of agglomeration का है, it is more or less like in a very crude form. अगर हम सिंगल सेंटर की बात करें तो सिंगल सेंटर में आप देखेंगे कि जहां पे भी आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन है, बिकॉज the transportation cost is talking about the raw material. Transportation cost is talking about the transportation, the earlier part of the theory जो transportation cost पे based है. तो transportation cost एक आपकी जो प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उस प्रोडक्ट से एसोसिएटेड है. So that is going to be a very integral component of the industry. Then comes the labor cost. So labor is also integral to the industry. बट यहां पे जो आपका कंपोनेंट की बात की जा रही है माइट बी दैट इज नॉट डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री. इट इज लाइक दैट यू वांट टू सेट अप द एरोस्पेस बेस्ड इंडस्ट्री. बाद में हमें सॉफ्टवेयर की जरूरत लगेगी, डेफिनेटली सम रोल कैन बी प्लेड बाय द आईटी सेक्टर, बट इनिशियली व्हेन यू विल लुक आउट द रोल ऑफ आईटी
or any area where already some of the industrialization is there, so that might not be very much relevant. तो आप एरोस्पेस की कोई इंडस्ट्री सेटअप करना चाहते हैं और अगर आप बेंगलुरु में सेटअप कर रहे हैं, ऑटोमोबाइल सेटअप इंडस्ट्री सेटअप करना चाहते हैं, आप बेंगलुरु में सेटअप कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इट इज द केस ऑफ एग्लोमेरेशन. Agglomeration is simply that other industries will offer some sort of advantage. So it is not like the same sector. हाँ ठीक है, आप डायमंड का बिजनेस करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू सेट अप अ डायमंड इंडस्ट्री, सो ऑब्वियसली द मोस्ट ऑप्टिमम लोकेशन विल बी द सूरत. The Surat will offer the agglomeration, but the Surat that is going to offer, here you are going to utilize, you are settling up the same industry, जिसके ऑलरेडी आपके पास बहुत सारे अदर इंडस्ट्रीज आर देयर. तो वहां पे बाकी फैक्टर्स काम कर सकते हैं, लाइक चीप लेबर इज अवेलेबल, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का मामला होगा, मार्केट का मामला होगा. बट इफ यू आर नॉट interested, or if you're not doing the business of the diamond, but still you want to set up the sector, you want to set up some other industry other than the textile, other than the gems and jewelry in Surat, so means you are going to take the advantage of agglomeration. Agglomeration also plays very important role in the development of the some of the towns. तो ये जो आपका टाउन्स का ग्रोथ है, एक तरीके से कहें कि जो प्राइमेसी डेवलप होती है कुछ आपके सिटीज में, जो बहुत सारा डेवलपमेंट हो जाता है, तो वहां पे एग्लोमेरेशन का इफेक्ट काम करता है. जैसे दिल्ली एनसीआर, तो दिल्ली एनसीआर इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ दिस एग्लोमेरेशन. मुंबई आपका अनदर एग्जांपल है, चेन्नई. तो जितने भी हमारे मेट्रोपॉलिटन एरिया है, जिसको इन केस ऑफ सेटलमेंट वी कॉल इट एज प्राइमेसी. तो व्हाट कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमेसी ऑफर्स इज ऑल्सो बीइंग सजेस्टेड बाय द वेबर इन द फॉर्म ऑफ एग्लोमेरेशन. So this is about the theory of industrial location by the Weber. Now we will look out one few case studies. तो हम लोग कुछ केस स्टडी देखते हैं, और जो पहली केस स्टडी देखेंगे that is primarily associated with the location. तो लोकेशन के बेस पे हम लोग लेबर कॉस्ट के बेस पे कैसे लोकेशन डिसाइड होती है इंडस्ट्री की, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड. देन वी विल लुक आउट द ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ऑल्सो. तो उस केस में भी हम लोग देखेंगे किस तरीके से वेट लूजिंग, वेट गेनिंग रॉ मटेरियल्स प्ले करते हैं. दैट वी विल कंसीडर इन टर्म्स ऑफ इंडिया. तो जिससे आपका जीएस पेपर 1 में भी कुछ आपको बेनिफिट मिले, उसका डिस्कशन हम लोग करेंगे. लेबर कॉस्ट का एग्जांपल देखते हैं कि हाउ द लेबर कॉस्ट विल बी अ फैक्टर्स ऑफ लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री. In the early part of the 20th century, starting from that, most of the manufacturing, electronic, automobile industries have developed in different part of the world, but US became a very important industrial hub. तो चाहे वो टेक्सटाइल की इंडस्ट्री हो, चाहे वो आपकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री हो, most of the industries has developed in the USA. But 1950s, 60s आते आते there has been some of the pressure has been witnessed to those industries to make the profit. क्योंकि everyone recession की वजह से the people was not that much interested in purchasing the items. So these companies, industries were forced to offer the discount. अब आप discount offer तभी कर सकते हैं जब आपकी cost of production कम हो. तो they were looking out to reduce the cost of production. Now try to understand that how this role of labor plays, जो बाद में वेबर ने कंसीडर किया. मेक्सिको इज ऑन द बॉर्डर, तो मेक्सिको और यूएसए शेयर्स द बॉर्डर, एंड मेक्सिको इन दैट टाइम पीरियड वाज नॉट, इन फैक्ट स्टिल टुडे, टिल टुडे मेक्सिको इज नॉट दैट मच डेवलप्ड, बट इन दैट टाइम पीरियड मेक्सिको वाज फेसिंग सीवियर प्रॉब्लम्स related to the poverty, economic growth. So Mexico has offered the US companies that you can set up the industry in our country and in exchange we will give some tax concession. तो taxation में concession होगा, और भी बहुत सारे labor laws में concession होगा. So they try to attract the industry. Now industries have been attracted and they have started settling up. माक्यूलाडोरास, और माक्यूलाडोरास जो उन्होंने सेटअप किया ऑलमोस्ट एट द बॉर्डर एरिया.
So in the border areas they have set up some of the maquiladoras. और अगर आप border area देखें तो here you can look out. Almost at the border, very near. So very near to this USA. Few of the maquiladoras have been set up 20 kilometer from the border of USA. तो अगर आप 20 किलोमीटर दूर सेटअप कर रहे हैं, it is more or less like USA itself. So 20 kilometers away they have set up the maquiladoras. और जो initial maquiladoras आपके सेटअप किए गए, the initial maquiladoras have been set up in 1966. By 2006 there were around 3,000 maquiladoras and around 1 million labor were involved in these maquiladoras. So around 3,000 maquiladoras have been set up and 1 million people were working in those maquiladoras. Now, what is the idea of this maquiladoras and why we are discussing this maquiladoras? Try to understand. In maquiladoras, at that particular time, I'm discussing about the situations of 2005. तो 2005 की अगर बात करें, in 1966 even the situation was much different. 2005 में जो आपका एक average cost of wage है, that was around $20. It was $20 per hour in USA. और ये जो maquiladoras थे, यहां पे it is hardly, there was variation, but entry level जो आपकी जॉब है, entry level जॉब के लिए जो आपका average wage rate है, that is around $3 per hour. Now you can see that there is almost not more than 40%. So it is roughly in fact 15%, sorry. So 15% is the wage in case of if you are manufacturing your product in the maquiladoras. When you have 50% means, एक अगर हम क्रूड फॉर्म में बात करें तो अगर आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 100 रुपीज यूएसए में है तो अब यहां पे जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो 15 रुपीज हो गया. ठीक है, देयर विल बी सम ऑफ द चार्जेस दैट यू नीड टू इन्वेस्ट. सो एनीवे दैट इज नॉट गोइंग टू बी मोर देन 25. तो जो आपका 100 रुपीज है इसमें आप बहुत सारा ऑफर प्रोवाइड कर सकते हैं. सो यू कैन ऑफर, यू कैन गिव द डिस्काउंट. अब अगर आप डिस्काउंट देंगे तब भी आप यू कैन मेक द प्रॉफिट. सो दैट इज व्हाई दे हैव shifted their business, their manufacturing to these maquiladoras. So from the 1966 till early part of the 21st century, there has been a great rise in the number of maquiladoras and the people associated with the maquiladoras, and most of the businesses of the USA have been set up. And in fact, sometimes some of the cases they have completely transferred their entire supply chain. They have put up, they have left this some of the front offices in the USA. So they have heavily benefited. One more benefit was there, that in maquiladoras the females were mainly working, and Mexico was having the policy of almost 48 hours a week work. So because of that also these areas have been benefited. So this is a classical case of labor cost. अगर हम लेबर को देखें, labor cost. अब यहाँ पे एंट्री होती है चाइना की. Now in the later part of the 20th century, China has also started growing because of the improvement in their transportation, because of the improvement in their supply chain. तो supply chain अच्छा हुआ, transportation अच्छा हुआ, उन्होंने अपनी market को open किया, and labor was also available. And the most important part is China itself is having a very great market, very big market, and they have offered their cost of labor was almost 60 cents. So what was in case of USA? USA का almost 30%, 15% is available in case of maquiladoras. But now there is an emergence of a place where almost it is not more than 0.3%. So when you will have such a low wage rate, so it's a very much rational
to shift the center, to shift the manufacturing to that particular area. In this way, the most of the manufacturing centers have been shifted to the China, and this is how the China over the period of time became a global manufacturing hub. So emergence of the global manufacturing hub of the China is a classical case of the classical model of the Weber. It is a classical theory of the Weber. So Weber's theory is very much valid. किस तरीके से आपका, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग लेबर कॉस्ट plays very important role, but the China was also offering the other aspect. So China was offering what other things China was offering? So China, other than the labor, China was offering, there is a very good labor law. तो अगर आपका लेबर लॉ, इनफैक्ट इवन इन चाइना ऑल्सो, जो आपका माइग्रेशन है, जो रूरल से आपका अर्बन में माइग्रेशन है, वहां पे फीमेल सेंट्रिक माइग्रेशन है. सो फीमेल सेंट्रिक माइग्रेशन मींस इन अर्ली part of this manufacturing development, most of the labor was a female, and again when they will have a female workers, so female workers supposed to be more diligent, more efficient, and there won't be any kind of problem of union assembly. तो जो आपका यूनियनिज्म है वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए बहुत अच्छा है. ऑल्सो हियर विल हैव द इंप्रूव्ड सप्लाई चेन, तो सप्लाई चेन बहुत इंप्रूव्ड है. बेटर ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट फैसिलिटी, largest population. Because of all these advantages, majority of the manufacturing shifted to China in search of cheap labor cost. And obviously cheap and efficient labor cost. So this is a classical model of the Weber. So Weber's model is very much applicable in this area. In fact, there can be a counter question that if China is offering that cheap labor, so why not India or other South Asian countries, specifically the Philippines, Vietnam? तो यहाँ पे क्या है? अब आप देखेंगे कि India is also offering the cheap and efficient labor. Initially, our economy was not open, so we have opened our economy after this LPG reform. That was one factor. Even after the opening, one bottleneck that plays that hinders the growth, because India also offer very cheap labor cost. But here we have a problem of supply chain and the port and hinterland connectivity. तो हमारा जो पोर्ट और hinterland connectivity है उसमें कुछ आपकी hindrance है. उसी की वजह से जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग है that is not that much developed. Obviously over the period of time we are developing, we are matching, we are catching up the development of the China, but obviously the China has already taken the leap and China has become the global manufacturing hub, mainly based on this idea of the Weber. So this is your model of industrial location theory suggested by the Weber. Now we will also look out this model of Weber's in the Indian context. तो हम लोग Indian context में भी कुछ देखते हैं development of the industries, and we are mainly looking out from the perspective of optional as well as GS. तो अब हम लोग जो discussion करेंगे, that discussion is also including this part, that is the GS paper 1. So it is not only related to the geography optional. So it is not only going to be associated with geography optional, but it also include some of the discussion that is going to be helpful for your GS paper. देखते हैं. The very first industry India के context में आप you can think of the sugar industry. Now when you will look out the sugar industry again, just think about that sugar industry falls in which category? Sugar industry falls in the category of weight
losing industry. So sugar industry is a weight losing industry. And if the sugar industry is a weight losing industry, means there will be a greater pull that will be offered by the raw material. And if the raw material is offering a greater pull, what is the raw material here? In this case, the raw material is your sugar cane producing areas. Means the sugar industry needs to be set up nearby the rural areas, because your sugar cane will be mainly cultivated in the rural areas, not in the urban areas. So sugar industry needs to be set up nearby the rural area. If you will set up in the urban area, the profit will go down. So if you will apply the idea of the Weber, Weber have suggested if there is a greater pull offered by the raw material, industry needs to be set up. इंडिया में अगर आप देखेंगे तो दो मेजर सेंटर है that is known for the cultivation of the sugar cane, and these two centers are primarily associated with the northern belt, so Ganga Satluj plain, northern belt, and the peninsula. So northern belt and peninsula, these are the two major hubs for the sugar industries. So sugar industries का जो कंसंट्रेशन होगा इंडिया में, वो एक आपका नॉर्दर्न बेल्ट में होगा और दूसरा आपका पेनिनसुला में होगा. तो सुगर इंडस्ट्रीज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वन इज नॉर्दर्न बेल्ट led by UP and another one is peninsular belt here led by महाराष्ट्र. तो ये दो हमारे मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं जहां पे आपको सुगर इंडस्ट्रीज मिलेंगे. अब इसमें भी कुछ चेंजेस हो रहे हैं. तो ये तो आपका क्लासिकल हो गया, दैट इज एसोसिएटेड विद द आइडिया ऑफ द वेबर. तो वेबर के आइडिया से देखेंगे तो आपका जो इंडस्ट्री है सुगर इंडस्ट्री यूपी में देखने को मिलेंगी और आपकी महाराष्ट्र में देखने को मिलेंगे. बट इफ यू लुक आउट द प्रेजेंट सिनेरियो, प्रेजेंट कंटेक्स्ट, देन यू विल फाइंड इन द प्रेजेंट टाइम पीरियड large scale industries, large scale sugar industries are being opened in the Maharashtra in comparison to the northern belt, specifically UP. तो जो आपकी सुगर इंडस्ट्रीज है वो ज्यादा ओपन की जा रही, ज्यादा सेटअप की जा रही इन केस ऑफ पेनिनसुला इन कंपैरिजन टू द northern belt. Now why the more and more sugar industries are being opened in peninsula? So in present more sugar mills are being opened in peninsula. तो यहां पे आपको ज्यादा सुगर मिल्स मिलेंगे. इट इज मेनली बिकॉज इफ यू विल लुक आउट द क्वालिटी ऑफ द सुगर केन, सो क्वालिटी मेनली इन टर्म्स ऑफ द सेल्फ लाइफ, because sugarcane is a labor intensive crop. Here you will first harvest the crop and then the crop needs to be taken to the industry. तो ये जो आपका टाइम पीरियड होता है, it is referred as the crushing time period. Crushing time period is a higher in case of peninsula because of the weather, that is the coastal climate that is being offered in most of the coastal areas in comparison to the northern India. तो नॉर्दर्न इंडिया में जो क्रशिंग पीरियड है वो थोड़ा कम है. तो क्रशिंग पीरियड अगर आपका कम होगा तो मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री विल बी द स्मॉल इंडस्ट्री. लेकिन अगर आपका क्रशिंग पीरियड थोड़ा ज्यादा है तो आप इंडस्ट्री थोड़ा दूर भी सेटअप कर सकते हैं. तो इंडस्ट्री ज्यादा एरियाज को, एक ही इंडस्ट्री ज्यादा एरिया को कवर कर पाएगी. तो इन दैट केस इट विल बिकम ऑलमोस्ट मीडियम इंडस्ट्री. तो मीडियम इंडस्ट्री होगी, कैपिटल ज्यादा होगा, तो ऑब्वियसली इट कैन एम्प्लॉय सम ऑफ द न्यूअर टेक्नोलॉजी, न्यूअर मेथोडोलॉजी. तो टेक्नोलॉजी अगर आपकी अच्छी होगी तो एफिशिएंसी भी आपकी अच्छी होगी. तो क्लाइमेट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर. देन अनदर थिंग इज दैट इन नॉर्दर्न इंडिया देयर इज अ केस ऑफ फ्रॉस्टिंग. तो देयर इज एक्सट्रीम हीट एंड एक्सट्रीम कोल्डनेस. दोनों ही केसेस शुगर केन की क्रॉप को हार्मफुल है. सो शुगर केन क्रॉप इज हाईली अफेक्टेड बाय द फ्रॉस्टिंग एंड द हाई हीट. अब अगर आपकी फ्रॉस्टिंग है और हाई हीट है तो उन कंडीशंस में आप देखेंगे कि सुगर इंडस्ट्रीज का जो ऑपरेशन है दैट इज गोइंग टू बी ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट. फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव वी विल फाइंड दैट इन नॉर्दर्न इंडिया मोस्ट ऑफ द सुगर इंडस्ट्रीज आर बीइंग ऑपरेटिव फॉर द 6 to 7 months.
4-5 months they are inoperative. तो इतने लंबे समय तक अगर आपकी इंडस्ट्री इनऑपरेटिव है तो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू हैव अ large scale pressure over the industry. So industry, sugar industry is not a profit making industry, but this profit making is even more problematic in case of northern belt in comparison to the peninsula. So peninsula offers some of the advantages because of in peninsular India the cooperatives are well developed, and in cooperatives the sugarcane production is higher. So because of the advantages offered by the peninsula, most of the sugar industries are shifting toward the peninsula in the contemporary time period. Now there is one more industry that we will take up, is a cotton textile. The distribution of the cotton textile. Cotton textile is a very good example, and in fact कई बार क्वेश्चन पूछा गया है. If we will take up the some of the questions अगर देखें हम लोग, so if we will look out the questions from the GS, तो ये GS का क्वेश्चन है, not the optional. There is a question जहां पे आप देख सकते हैं कि there is a clear involvement of Weber. Discuss the factors for localization of agro-based food processing industries of Northwest India. Then there is a question, account for the present location of iron and steel industry away from the source of raw material. So regularly question, there was a question also that why more sugar mills are being opened in the peninsula. So that has also been asked in the previously in GS paper 1. Then cotton से related भी questions आपको पूछा जा सकता है, that discuss the evolution of the cotton textile in India, या discuss the major shift in the cotton textile industries in India. Cotton textile happens to be very important sector in India. तो cotton के लिए India बहुत famous था worldwide. So it you can say this was one sector that was booming in India. And when the Britishers came here, almost they were not in a capacity to compete with the Indian made cotton cloths. India का muslin world famous था. And when the Britishers was not able to compete, so they tried to systematically destroy the cotton textile centers. तो जो हमारे earlier cotton textile centers थे, उनको एक systematic तरीके से destroy किया गया. So that is a different thing. So there has been a revival of this cotton textile. तो जो modern time period में cotton textile setup किया गया, modern time period में cotton textiles have been set up in 1854 by a Parsi in Mumbai. तो हमारा जो revival है, इससे पहले भी attempt किया गया, but that was not successful. So जो हमारा revival है cotton textile का, that revival start from this 1854. और ये जो आपका 1854 में revival हुआ आपका, वो क्यों मुंबई? नाउ द क्वेश्चन राइजेस दैट व्हाई मुंबई हैव बीन सेलेक्टेड. मुंबई हैव बीन सेलेक्टेड फ्रॉम द बिकॉज ऑफ द वेरियस थिंग. बिकॉज अगर कॉटन टेक्सटाइल को आप देखेंगे, इट इज अ फुट लूज. इट इज अ फुट लूज मींस इट कैन बी सेटअप एनीवेयर. तो अगर आपका ये कहीं पे भी सेटअप हो सकता था, तो बाकी भी एरियाज में सेटअप करके सक्सेसफुल होता. बट देयर आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ लोकेशन ऑफ दिस इंडस्ट्री इन मुंबई. द फर्स्ट फैक्टर वाज because Mumbai was already having a very easy availability of the market. तो market availability आपकी थी. Other than the market availability, Mumbai is a well connected. So Mumbai was a well connected from the nearby cotton producing areas.
सो फ्रॉम द डेक्कन प्लेट्यू जो आपका कॉटन प्रोडक्शन हो रहा है महाराष्ट्र में, गुजरात में, उससे कनेक्टेड था, तो देयर वाज अ गुड सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स आर कॉटन. ऑन टॉप ऑफ इट जो आप टेक्सटाइल बनाएंगे, सो टेक्सटाइल में यू विल ऑल्सो यूज कलर, तो कलरिंग के लिए आपका उस समय डाई यूज होती थी, तो डाई के लिए आपको इंडिगो चाहिए और इंडिगो के लिए आपको कुछ इंपोर्ट करना होगा, तो पोर्ट वाज आल्सो अवेलेबल. Most of the wealthy people was living in the Mumbai. So wealthy people are living, so there will be a credit facility. So all these were favorable for the settlement of the cotton textile. On top of it, earlier they were using the pure cotton thread, and in pure cotton thread, the nature of the pure cotton thread is that there is a tendency of breaking the thread in the dry condition. तो अगर आप किसी ड्राई एरिया में कॉटन थ्रेड बनाएंगे तो वो जो कॉटन थ्रेड है वो आपका टूटने लगेगा, और अगर कॉटन थ्रेड टूट रहा है तो आपकी जो टेक्सटाइल है वो अच्छी नहीं बनेगी, तो डेफिनेटली यू विल इनकर द लॉसेस. इसी वजह से जो आपकी 19th सेंचुरी में जितने भी आपके मोस्ट ऑफ द प्लेसेस वर्ल्ड वाइड, be it your eastern part of China or be it your North America, मेक्सिको के आसपास का एरिया है, जितने भी जगहों पे आपका कॉटन टेक्सटाइल सेटअप किया गया, दैट वाज हैविंग द कोस्टल क्लाइमेट. वर्ल्ड वाइड इसे कहते हैं लॉरेंसियन क्लाइमेट. सो लॉरेंसियन क्लाइमेट, योर गल्फ क्लाइमेट, चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट. तो वर्ल्ड वाइड आपका जो है चाइना टाइप, गल्फ टाइप ऑफ क्लाइमेट वाज वेल सूटेड फॉर द कॉटन टेक्सटाइल. इंडिया के केस में इट वाज द कोस्टल क्लाइमेट व्हिच वाज वेरी फेवरेबल, एंड इन कोस्टल क्लाइमेट देयर वोंट बी एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम ऑफ द ब्रेकिंग द थ्रेड. तो दैट वाज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल फैक्टर. सो कॉटन थ्रेड ना टूटे इसकी वजह से कोस्टल क्लाइमेट सेलेक्ट किया गया. कोस्टल क्लाइमेट. In Mumbai, the industry have been set up in mostly the lower Parel area. So lower Parel area was the area where most of the initial cotton textile centers have been set up. In almost right from that settling of the industry, within the next 15-20 years, cotton textile have boomed. So there has been a booming of the cotton textile centers, the demand and the growth. It was very phenomenal growth. In fact, in 1877, it has been, because there has been a newer technology and over the period of time, they have started using synthetic thread. तो जैसे ही synthetic thread use हुआ तो definitely आप industry कहीं और setup कर सकते हैं. तो बाद में नागपुर में setup किया गया. And by 1880, there has been a sudden increase of the land prices. तो लैंड प्राइसेस बढ़ने लगा. लैंड प्राइसेस बढ़ने लगा तो फिर आपका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी बढ़ने लगा. सो मुंबई में जो प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था वो बढ़ने लगा. बिकॉज ऑफ दैट दे वर लुकिंग आउट द सम अदर सेंटर. तो अल्टरनेट सेंटर के तौर पे देखा गया अहमदाबाद. सो अहमदाबाद केम इनटू द पिक्चर, एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अहमदाबाद बिकेम लाइक अ मैनचेस्टर ऑफ इंडिया. सो अहमदाबाद हैज ऑल्सो विटनेस्ड अ वेरी rapid growth of cotton textile. In fact, with the introduction of the synthetic thread, now cotton textile can be set up anywhere. Present time period, cotton textile is the most decentralized industry of our country, and in fact, it employ a very large number of employee in our country. So it's a very important agro-based industry other than the sugar industry. So this is how the industry have been set up, and this is how the cotton textile have evolved. So again, it's a classical model of Weber that industry should be based on the location. तो किस तरीके से आपका ट्रांसपोर्टेशन, मार्केट एक्सेसिबिलिटी काम करता है, तो इसमें भी आप देख सकते हैं the role of Weber. Now the last industry that I will take up in this session is a very important industry, is the iron and steel industry. So even in India, the next industry is a iron and steel industry. Iron and steel industry. Now when it comes to the iron and steel industry, the development of the iron and steel industry in India
has started in the early part of the 20th century. And in fact, the development of the iron and steel industry is very much synonymous with the Tatas. So in 1907, the first iron and steel plant have been set up. The earlier town of the Sakshi, but later on it has been renamed as the present Jamshedpur. So in 1907 आपकी इंडस्ट्री सेटअप की गई प्रेजेंट जमशेदपुर में, एंड दैट वाज द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, दैट इज टिस्को हैव बीन सेट अप. Later on in 1919, Indian iron and steel in the name of IISCO, ISCO, Burdwan. In fact, in 1923, Mysore steel works have been set up, which is also being referred as the Bhadravati steel plant or the Visvesvaraya steel plant. And in fact, this development over the period of time has given a good boost for the industrial development, because in the present time period, most of the industrial development or the economic development of any country is being associated with the industry growth as well as infrastructure. And in the industrial growth as well as infrastructure, very important role is being played by the steel. तो मॉडर्न टाइम पीरियड में जो डेवलपमेंट है किसी कंट्री का, उसमें इट इज ऑल्सो वेरी मच सिनोनिमस विद द यूज ऑफ कंजम्पशन ऑफ स्टील. India is one of the leading producer of the steel. Consumption is also comparatively good. Of course, if you'll compare with some of the highly developed countries, उससे थोड़ा कम है, but still our consumption is growing. Now the question arises that how these locations have been selected. तो ये जो locations हैं किस तरीके से select किया गया. अब अगर आप लोकेशन देखेंगे तो जो आपकी टाटा एंड आयरन एंड स्टील कंपनी सेटअप की गई, व्हाई द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी हैज बीन सेटअप इन दैट एरिया, मेनली बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज. जो आपका आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज प्राइमरली बेस्ड ऑन टू इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट. वन इज अ कोल, अनदर वन इज अ आयरन ओर. अब अगर हम इंडस्ट्री का, जो स्टील इंडस्ट्री का ग्रोथ है, उसको देखें तो जो इनिशियल फेज में, बिकॉज फ्रॉम हियर यू विल हैव अ ऑन कमिंग ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. फ्रॉम द इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टील हैज बीन प्रोड्यूस्ड, एंड इन द प्रोडक्शन ऑफ द स्टील दे हैव यूज्ड कोल एंड द आयरन ओर. But before the production of the steel in the form of industrialization, earlier they were using the pig iron, they were using mostly the smelting of iron. So how the smelting was being done? For the smelting they were using the charcoal. So in the earlier production of the steel, the very important ingredient was the charcoal. तो आप कह सकते थे कि initial phase it was the charcoal based, और charcoal की जो availability है वो ऑफ कोर्स फॉरेस्ट एरिया में ज्यादा होगी, नियर बाय द फॉरेस्ट ज्यादा होगी. एंड व्हेन यू विल हैव द फॉरेस्ट एरिया, नियर बाय द फॉरेस्ट एरिया, अवेलेबिलिटी ऑफ द चारकोल, एंड फॉरेस्ट विल आल्सो ऑफर द विंड. सो नियर बाय द फॉरेस्ट देयर विल बी ग्रेट बर्निंग. तो बर्निंग आपकी आसान होगी. इसीलिए जो इनिशियल इंडस्ट्री सेटअप की गई थी नियर बाय द फॉरेस्ट, सो इनिशियल स्टील प्लांट्स हैव बीन सेटअप नियर बाय forest in most of the Europe and other part of the world. In fact, ये जो मैंने आपको बताया, these two were primarily associated with the coal and iron ore. लेकिन ये जो आपका southern India है, peninsula है, southern India peninsula is a very important mineral rich resource region of our country. But this mineral rich resource region of our country lacks in one of the important mineral, that is coal. तो यहां पे कोल की अवेलेबिलिटी नहीं है, और अगर आपकी कोल की अवेलेबिलिटी नहीं है तो डेफिनेटली यू विल रिक्वायर समथिंग फॉर द एनर्जी. सो इनिशियली दे वर यूजिंग द चारकोल.
तो शुरुआत में इवन इन द मैसूर स्टील वर्क दे वर यूजिंग द चारकोल, बट ऑफ कोर्स लेटर ऑन दे हैव स्टार्टेड यूजिंग द हाइड्रो पावर। तो हाइड्रो पावर से यूज होने लगा तो डेफिनेटली उसका नेचर बदल गया, बट नियर बाई फॉरेस्ट सेटअप किया गया। अब आते हैं मेन आपका स्टील का। तो जब मेन स्टील का प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ तो ऑलमोस्ट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वन क्वांटिटी ऑफ कोल they were requiring 8 quantity of one quantity of steel। तो स्टील के प्रोडक्शन में for the production of one quantity of steel they were requiring 8 quantity of coal and 1 quantity of iron ore। if you will apply the locational triangle of Weber तो आप क्लियरली कह सकते हैं कि कोल का ज्यादा पुल होगा। सो नेक्स्ट फेज में जो आपकी इंडस्ट्री सेटअप की जाएगी पूरे वर्ल्ड वाइड, दैट विल बी नियर बाई coal producing areas। so most of the steel plants have been set up nearby the coal producing areas। तो इंडिया में भी जो आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू बेल्ट है, so here you will have the steel plants have been set up in Odisha, in Jharkhand, in West Bengal, that were part of the coal producing area। of course here iron ore was also there, but still higher quantity requirement is of the coal। later on with the oncoming of electric furnaces the proportion of coal and iron ore change, and when the proportion of coal and iron ore change, now we require 1 quantity of coal and 2 quantity of iron ore for production of 1 quantity of steel। immediately the proportion change means now we can set up the industry to those areas where coal is not there, and this is referred as third phase nearby आयरन ओर प्रोड्यूसिंग एरियाज। अब इंडिया में आपका जो भद्रावती स्टील प्लांट है, सलेम स्टील प्लांट है, सलेम स्टील प्लांट इन तमिलनाडु। सो दीज भद्रावती स्टील प्लांट, सलेम स्टील प्लांट, दीज आर प्राइमरली डिपेंड्स ऑन द आयरन ओर, क्योंकि कोल तो आप दूसरे फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, हाइड्रो पावर से यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट सम ऑफ द प्लेसेस वर्ल्ड वाइड where they were not having availability of the coal, iron ore, it was only the availability of iron ore, so they have started importing, क्योंकि आपकी क्वांटिटी कम है, now you can manage that quantity with the import। so over the period of time import of coal has started। अब जैसे इंडिया ही है, तो इंडिया के केस में आप देखेंगे कि इंडिया में जो आपका इंडस्ट्री स्टील के लिए चाहिए, we require coking coal and we have lesser availability of coking coal। in India we have a great amount of availability of coal, लेकिन जो हमारा coking coal की availability है वो कम है, तो coking coal हमें मंगाना पड़ता है। so we are importing the coal in our country। अब अगर हम कोल इंपोर्ट कर रहे हैं तो पोर्ट पे आपके कोल की अवेलेबिलिटी है, उसी के साथ में इंडिया इज वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर एंड मेजॉरिटी ऑफ आवर आयरन ओर इज ऑल्सो बीइंग एक्सपोर्टेड। और एक्सपोर्ट कैसे करेंगे वो भी हम पोर्ट पे ले जाएंगे। तो अगर आप पोर्ट के आसपास देखेंगे तो यू विल हैव अवेलेबिलिटी ऑफ कोल एंड यू विल हैव अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन ओर। पोर्ट इज नॉट अ नेचुरल रीजन, रॉ मटेरियल्स का आपकी यहां पे नेचुरल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होने की वजह से यहां पे आपकी अवेलेबिलिटी बनेगी। तो नेक्स्ट फेज में जो आपकी इंडस्ट्री शिफ्ट हुई अवे फ्रॉम द रॉ मटेरियल, अभी तक आपकी रॉ मटेरियल के पास में कोल एंड द आयरन ओर, बट नाउ the industry has started shifting away from the raw material, that is nearby port। throughout the world lots of places steel plants have been set up in the port area because the port will offer you the greater connectivity either for the import or for the export। तो इस तरीके से आपका स्टील प्लांट का एवोल्यूशन है। in fact over the period of time it is coming out that the steel plant is also contributing greatly in the greenhouse gas emission। तो आपकी मेजर पोल्यूटिंग इंडस्ट्री में फॉल करती है। तो टारगेट ये भी है कि आपका जो पोल्यूशन है उसको कम किया जाए। अब पोल्यूशन को किस तरीके से कम कर सकते हैं? सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव nowadays India and throughout the world there is a tendency of settling some of the mini steel plant, and the mini steel plant primarily being set up nearby the urban centers to just cater the demand of the urban area from the domestic level। So mostly from the
domestic consumers perspective, they are trying to fulfill their individual demand, household demand. तो जो household की demand है, like in the present time period, everyone is requiring the stainless steel, जिसको आप कहते हैं SS. तो stainless steel की demand आपकी major steel plant पे उसकी dependency ना हो, इसके लिए they are promoting the mini steel plant. Mini steel plant के साथ खास बात होती है कि mini steel plant will have a very less pollution. So if it is going to have a lesser pollution, means it is also sustainable, it is a good from the environment perspective. So जो last phase है आपका, this last phase is associated with tendency of opening mini steel plant. अब ये जो आपका mini steel plant है, mini steel plant means it is having a mostly being set up nearby the urban area. So present time period, most of the mini steel plants are being set up nearby urban centers. So like here you can see some of the your steel plants like Burhanpur, Durgapur, Bokaro, Raurkela, Jamshedpur. फिर आपका जो पोर्ट बेस्ड है, that is Visakhapatnam. Then in the Bhadravati है Salem steel plant in the peninsular area. So these are the some of the locations of industry. So that is all about the industrial location theory and related distribution of some of the important industry. So I am hopeful that after going this session, you must have got the better clarity. तो आपको अब इंडस्ट्रियल लोकेशन के क्वेश्चंस में चाहे वो जीएस हो चाहे वो ऑप्शनल हो, उसमें कोई समस्या नहीं आनी चाहिए. सेशन वाज मेनली एसोसिएटेड विद द ऑप्शनल, लेकिन ये जीएस के स्टूडेंट के लिए भी उतना ही बेहतर रहेगा, क्योंकि जीएस में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस टाइप के क्वेश्चंस टैकल करने में, जहां पे डिस्ट्रीब्यूशन पूछते हैं, व्हाई मोस्ट ऑफ द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन द कोस्टल एरिया, व्हाई मोस्ट ऑफ द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, व्हाई मोस्ट ऑफ द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज आर कंसंट्रेटेड इन द कोस्टल रीजन, स्पेसिफिकली इन द वेस्टर्न रीजन. तो बहुत सारे इकोनॉमी के भी जो टॉपिक्स हैं, इकोनॉमी का भी जो क्वेश्चन है, जहां पे डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है, तो वहां पे स्टूडेंट गेट कंफ्यूज कि किस तरीके से टैकल किया जाए. एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट स्टार्ट टैकलिंग दैट क्वेश्चन रिलेटेड टू द इकोनॉमी, वेयर एज जहां पे भी डिस्ट्रीब्यूशन की बात है, इन फैक्ट व्हेन यू विल स्टार्ट लुकिंग आउट द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, तो वहां पे कुछ एग्रीकल्चर का भी डिस्ट्रीब्यूशन यूज किया जाएगा. सो इट must have given you a great insight related to the topic of industry. So that's it from my side. For any kind of confusion, any kind of doubt, all of you can write in the comment, and definitely we will try to respond to that. So that's it from my side. Thank you.